बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगे। टुडे वी विल डिस्कस वेरियस टॉपिक्स। First of all, I would like to discuss the previous topic. We have discussed in previous lecture long-term debt paying ability, joint ventures, contingencies and financial instruments with concentrations of credit risk, and we have discussed the disclosures about fair value of financial instruments, and we have solved various practical exercises. Inshallah, today we will discuss various topics: profitability, then we will discuss the profitability measures, then we will calculate the net profit margin, then we will discuss about the total asset turnover, then we will discuss the return on assets, and we will solve the various practical problems. Now I would like to discuss the all items one by one. First of all, we will discuss the profitability of the business. Ability of the firm to generate earnings, that is called profitability of the business. Vital concern to stockholders, they drive revenue in form of dividends, that is called profitability for the stockholders. High profit lead to increase in market price, leads to capital gains for the business and for the shareholders also. Then we will discuss about the importance of the creditors in case of profitability. Profits are one source of funds for debt coverage of the firms, and we can measure the performance for the management and for the employees of the business also. Profitability meaningful measured as percentage of number of bases. First of all, we will discuss the productive assets, the owners and creditors, capital employed and sales. What is the profitability measures? We need to exclude some items from the profitability of the business, like discontinued operation income. We need to exclude the discontinued operation business income from the profitability of the firm. Then we will exclude the extraordinary item income from the profitability. Dear students, then we will calculate the net profit margin. Net profit margin means कि कितने परसेंट सेल्स का प्रॉफिट कंपनी को हुआ, एंड फार्मूला विल बी नेट इनकम बिफोर minority share of earnings, equity income and non-recurring items divided by net sales. You know about the net sales very well. Sales minus sales return minus sales discount and minus sales allowance, that will be the net sales of the business. Net profit margins also referred to as return on sales. Net profit margin reflects net income, dollars generated by each dollar of the sales. In case of net profit margin, some potential distortion, यहाँ मैंने पॉज लिया. In case of net profit margin, some potential
distortion or exists, like net other income or other losses. Now we will discuss in detail about the total asset turnover. Total asset turnover means कि आपके जो assets employed किए गए उससे आपकी sales कितने गुना बढ़ गई. The formula will be the net sales divided by average total assets. Asset total turnover measures the activity of the assets and the ability of the firm to generate sales through the use of the assets of the business. That is called total asset turnover. In case of total asset turnover, some potential distortion may be exist, like investments, construction in progress, other assets that do not relate to net sales. Another ratio is return on assets, कि आपने जो assets employed किए हैं उसके ऊपर हमें किस % से रिटर्न मिल रहा है. फार्मूला विल बी दी नेट इनकम बिफोर माइनॉरिटी शेयर ऑफ अर्निंग्स एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स. दैट विल बी द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स. डियर स्टूडेंट्स, what are the measures of return on assets? Measures the ability to utilize assets to create or generate the profits of the business. Average total assets means for the internal analysis purposes we need to calculate the average total assets month end amounts. In case of external analysis, we need to accumulate the beginning and ending balances of the total assets. If necessary, consistent use of end of year amounts. What does mean? कि अगर ज़रूरी हो तो at the end of the year we need to calculate the average total assets. Dear students, now we will solve various practical problems that will be very interesting for you. First of all, we will read out the question. All enterprises list the following data for 2004 and for the year 2003. Dear students, net income is given for the year 2004 is $52,500. Net sales is given 10,50,000 for year 2004. Average total assets are given, that is $230,000. Average common equity is given in 2004 is $170,000. And various amounts are given for the year 2003. What is the requirement? First of all, we need to calculate the net profit margin, return on assets, total assets turnover and return on common equity for both years. यानी कि 2003 और 2004 के लिए ये तमाम कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगी, ये रिक्वायरमेंट है. कमेंट ऑन द रिजल्ट्स फॉर रिटर्न ऑन एसेट्स एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर. यूज एंड ऑफ ईयर टोटल एसेट्स फॉर रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी. यूज एंड ऑफ ईयर कॉमन इक्विटी. दिस इज a requirement. First of all, dear students, we will calculate the net profit margin. मेरे साथ रहिएगा. अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं. बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा. First of all, we will calculate the net profit
margin is equal to net income before minority share of earnings and non-recurring items divided by net sales. Dear students, very simple formula for the calculation of net profit margin: net income before minority share of earnings and non-recurring item divided by net sales. Amount is given in your question. Question की तरफ देखें. Net income is given $52,500 divided by net sale is also given 10,50,000. तो मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज में अगर आपको आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे. कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें. डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर उठा लें और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें. नेट इनकम इज गिवन $52,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल 10,50,000. मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ. डिवाइडेड बाय 10,50,000 that will be 5%. So dear students, net profit margin for year 2004 is 5%. What shows that 5% of sales will be the profit of the company. Now we will calculate same thing for year 2003. Again you need to write down the formula. Net profit margin is equal to net income before minority share of earnings and non-recurring items divided by net sales for the year multiply by 100. तो अगेन हम अमाउंट क्वेश्चन से ले सकते हैं. फॉर ईयर 2003 नेट इनकम इज गिवन $40,000 एंड सेल इज गिवन 1 million. 40,000 divided by 1 million मीन 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. कैलकुलेटर लें और कैलकुलेशन सिंपल है. 40,000 डिवाइडेड बाय 1 million, that will be 4%. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा if you can compare the net profit margin between 2 years 2003 and 2004, in 2004 net profit margin has increased with 1%. Now basically company strength position is very good in 2004. Now we will calculate another ratio. What is the another ratio? Return on assets. Now we will calculate the return on assets is equal to, formula will be net income before minority share of earnings and non-recurring items
divided by average total assets. Again multiply by 100. So dear students, net income is given 52,500 for year 2004. Now we can take the amount of average total assets from question. Average total assets are given 230,000 for year 2004. मल्टीप्लाई बाय 100. कैलकुलेटर से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें डियर स्टूडेंट्स. 52,500 डिवाइडेड बाय 230,000 मल्टीप्लाई बाय 100, that will be 22.83%. तो डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स हमारे पास क्या है? 22.63%. नाउ we will calculate the return on assets for year 2003. Return on assets is equal to net income before minority share of earnings and non-recurring items divided by average total assets. Net income for year 2003 is given, that is 40,000, divided by average total assets are also given, that is 200,000. Multiply by 100. Already I told you 40,000 divided by 200,000 multiplied by 100, that is 20% return on assets for year 2003. If you want to compare with the 2004, you can see in 2004 2.83% increase in the return on assets of the business. That is good sign for the business. Dear students, now we will calculate the total assets turnover. Another ratio, total assets turnover. Formula will be the net sales divided by average total assets. Now we will calculate the total asset turnover for the year 2004. Net sales is given for year 2004, that is 10,50,000 divided by average total assets are given for 2004, that is 230,000. So dear students, 10,50,000 divided by 230,000, that will be 4.56 times per year. Dear students, यहाँ पे रिक्वायरमेंट टर्नओवर की हो तो आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा बल्कि टाइम्स में आएगा कि साल में 4.56 टाइम्स आपके एसेट जो है वो टर्नओवर है, यानी कि उसके ऊपर आपकी सेल हो रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट द एसेट टर्नओवर फॉर द ईयर 2003. टोटल एसेट्स
turnover is equal to net sales divided by average total assets. Net sales for year 2003 is given 1 million. Divided by average total assets is given 200,000. कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें 1 million divided by 200,000, that will be 5 times. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी रेशियो आपकी टोटल एसेट टर्नओवर. नाउ वी विल कैलकुलेट another ratio, that is return on common equity. Return on is equal to net income before non-recurring items minus preferred dividends divided by average common equity. Dear students, आपने देखा कि रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी फार्मूला इज नेट इनकम before non-recurring items minus preferred dividend. If preferred dividend is not given in the question, then we don't need to subtract the preferred dividend from the net income. In case of preferred dividend is given, then we must subtract the amount from the net income. Net income is given for year 2004, $52,500. नाउ हम क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या प्रेफर्ड डिविडेंड दिया हुआ है, नॉट गिवन. तो हम डायरेक्टली एवरेज कॉमन इक्विटी 170,000 से डिवाइड कर देंगे. 52,500 डिवाइडेड बाय 170,000. That will be 30.9%. Return on common equity will be the 30.9% for year 2004. Now we will calculate the return on common equity for the year 2003. Return on common equity is equal to net income before non-recurring items minus preferred dividend divided by average common equity. So dear students, net income for the year 2003 is given how much? 40,000, and 160,000 is average common equity. 40,000 वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 160,000 मल्टीप्लाई बाय 100. कैलकुलेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें. 40,000 divided by 160,000 multiplied by 100, that will be 25% return on common equity. Now we will discuss another exercise. What is the question? The balance sheet for Bone Company at December 31st, 1996
had the following account balances. Total current liabilities is given. Bond payable is given 750,000. You can see 6% shows that the interest on bonds. Keep in mind this thing, because in near future we will calculate the bond interest. Okay. Preferred stock 5% is given 100 par value. 5% means dividend will be given to the preferred stockholders at the rate of 5%. This thing also keep in mind. Next, common stock 10 par value, you know about very well. Premium on common stock, यानी common stock आपने premium पे issue किए होंगे, and retained earnings is given. Income before income tax was 200,000 and income taxes were $80,000 for the current year. What are the requirements? Calculate each of the following. Number 1, return on assets using ending assets, return on total equity using ending total equity. Now we will calculate the return on common equity using ending common equity. Then we need to calculate the time interest earned. First of all, we will calculate the return on assets. मेरे साथ रहिएगा. First of all, we will calculate the return on assets. Formula will be the net income before minority share of earnings minus dividends and non-recurring items divided by average total assets. Before the calculation of ratios, we need to calculate the sum amounts. First of all, we will calculate various amounts like earning before interest and taxes, interest and taxes. Dear students, question में earnings are given, income before tax was 200,000 is given, and interest we need to calculate the interest 6% of 750,000. 750,000 के ऊपर आप 6% ले लें डिवाइडेड बाय 100. कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें. That is 45,000. That will be the interest. Now we need to add up in earning before interest and taxes 200,000 plus interest expense. हमने कैलकुलेट किया 45,000 आया. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विल बी दी $245,000. देन माइनस अगर आप इंटरेस्ट कर दें, अगेन अर्निंग विल बी 200,000. दैट विल बी कॉल्ड अर्निंग्स बिफोर taxes minus taxes is given 80,000. अगर हम माइनस कर दें, अर्निंग विल बी दी 120,000.
20,000. That is called net income of the business. Then we need to deduct the preferred dividends. We can calculate the dividends also. क्वेश्चन में जाएं, 5% है, 300,000 के प्राइवेट स्टॉक्स हैं, तो 300,000 के ऊपर 5% आप ले लें. कैसे लेंगे? 300,000 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे साथ रहें. दैट विल बी दी 15,000. ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 105,000. दैट विल बी इनकम available to common stock holders. Remaining amount will be the 105,000 that is available for the common stock holders. Now we can calculate the return on assets. Formula is net income before minority share of earnings and non-recurring items divided by average total assets. Everything is given in the question. 120,000 profit is given. Net income 120,000 divided by average total assets. Average total assets हम find out कर लेते हैं. That is so dear students, we need to calculate the total assets. Where are total assets? Total assets हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास लाइबिलिटी साइड गिवन है, लाइक करंट लाइबिलिटीज गिवन है 450,000 प्लस बॉन्ड पेबल 750,000 प्लस प्रेफर्ड स्टॉक 300,000 प्लस कॉमन स्टॉक 750,000 प्लस प्रीमियम ऑन कॉमन स्टॉक इज 150,000 एंड रिटेन अर्निंग्स आर गिवन 600,000. जब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारे टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी आएगी. तो आपको पता है कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है. यही हमारे 3 मिलियन जो है वो हमारा एसेट भी होंगे. तो डिवाइडेड बाय $3 million मल्टीप्लाई बाय 100. टोटल कर लें 120,000 divided by 3 million, that will be 4%. तो dear students, very simple, कोई मुश्किल नहीं है. Basically we don't know about the assets, just we need to accumulate the all liabilities and owner's equity that will be equal to the total assets. तो हमने total assets से डिवाइड कर लिया. ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी. What is the second requirement? Return on total equity. Total equity. Formula will be the net income before non-recurring items minus dividends on redeemable preferred stock divided by average total equity. Dear students, net income is given 120,000 divided by average total equity is given
same as total assets multiplied by 100, that will be 4%. So dear students, already we have calculated return on total equity. Now we will calculate another equation. Dear students, now we will calculate another ratio, that is return on common equity. Return on common equity is equal to net income before non-recurring items minus average common equity divided by average common equity. Dear students, data is given, net income is given 200,000 minus 80,000 minus 15,000 divided by 15 lakh. डेटा पे चले जाएं तो डियर स्टूडेंट्स, नेट इनकम हमने कैलकुलेट की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 200,000, इसमें से माइनस कर दिया हमने टैक्सेस, ओके, एंड माइनस कर दिया हमने प्रेफर्ड डिविडेंड और डिवाइड कर दिया हमने किसके साथ, एवरेज कॉमन इक्विटी के साथ. तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लें. 200,000 minus 80,000 minus 15,000 divided by 15 lakh is equal to 7%. Return on common equity is 7%. Now we will calculate another ratio, that is times interest earned. Interest earned is equal to recurring earnings excluding interest expense, tax expense, equity earnings, and minority earnings divided by interest expense including capitalized interest. 245,000 is given as a recurring earnings divided by interest expense is also given 45,000 multiplied by 100. That will be 5.44 times per year. Dear students, already we have calculated the 245,000. You can see earning before interest and taxes plus interest expense added, earning with basically taxes and interest, that is 245,000. उसको हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 45,000 जो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो हमने कैलकुलेट किया था बॉन्ड के ऊपर. तो ये हमारी रेशोज थी इस क्वेश्चन की. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, बहुत आसान है. नाउ वी विल सॉल्व एन अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस डेटा फॉर व्हेन
molded plastics and for the plastics and for the industry as a whole are as follows. ये डेटा गिवन है, सेल्स रिटर्न, डिफरेंट आइटम्स गिवन है और प्लास्टिक इंडस्ट्री की परसेंटेजेस आर गिवन. रिक्वायरमेंट क्या है? कन्वर्ट दी डॉलर फिगर्स फॉर वेंट मोल्डेड plastics into percentages based on net sales of the business. Compute these with the industry average and comment on your findings. Basically जो डेटा आपको डॉलर में नज़र आ रहा है इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? परसेंटेज में. और हमने बेस किसको लेना है? नेट सेल्स को लेना है. तो नेट सेल्स के ऊपर ये माइंड में रखें कि नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स डिस्काउंट माइनस सेल्स अलाउंस, देन इट विल बी इक्वल टू दी नेट सेल्स. वन बाय वन हम कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दी नेट सेल्स. सेल्स इज गिवन हाउ मच? इज 462,000 minus sales return. Sales return is 4,500. That will be net sales. कैलकुलेटर से आप माइनस कर लें, सिंपल है. 462,000 माइनस 4,500 is equal to 4,57,000 and 500 will be the net sales of the business. Now we can calculate easily. Dear students, first of all we will calculate the sales. Sales को कैसे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स? बहुत आसान है. सेल्स की हम परसेंटेज कैलकुलेट करें. सेल्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. सेल्स इज 462,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल इज 457,500 मल्टीप्लाई बाय 100. मैंने पहले बताया था मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर कर लीजिएगा. दैट विल बी इक्वल 101% ऑफ द नेट सेल्स. नाउ we will calculate the sales return. Sales return is equal to sales return divided by net sales. Sales return is given 4,500 divided by 457,500 multiplied by 100. कैलकुलेट कर लें जल्दी से. Divided by 457,500 multiplied by 100, that will be 0.98%. तो dear students, सेल रिटर्न क्या परसेंटेज है नेट सेल्स की? 0.98%. Now we will calculate the cost of goods sold. Cost of goods sold is given 330,000. Cost of goods sold is equal to cost of goods sold divided by net sales. Cost of goods sold is given 330,000 divided by net sales is 457,500 multiplied by 100. कैलकुलेटर से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें. दैट इज 72.13%. यानी कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो नेट सेल्स का 72.13% है. नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर परसेंटेज, सेलिंग एक्सपेंसेस. is equal to selling expenses divided by
net sales multiplied by 100. Selling expenses are given 43,000 divided by 457,500 multiplied by 100. 43,000 divided by 457,500, that is 9.4%. डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो मेरे साथ आप करते रहें, कोई मुश्किल नहीं होगी. जनरल एक्सपेंसेस 32,000. General expenses divided by net sales multiplied by 100. General expenses are 32,000 divided by 457,500 multiplied by 100. That is 6.9%. राउंड अबाउट करेंगे तो 7%. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैलकुलेशन इज अदर इनकम. अदर इनकम इज 1800. Income is equal to other income divided by net sales. 1800 divided by 457,500 multiplied by 100. 0.39%. Next calculation is other expense are 7,000. Other expenses is equal to other expense divided by net sales multiplied by 100. 7,000 divided by 457,500 multiplied by 100, that will be 1.53%. Now we will calculate the last item, that is income tax. Income tax is $22,000. Tax is equal to income tax divided by net sales. 22,000 divided by 457,500 multiplied by 100. 500 multiplied by 100, that will be 4.81%. Dear students, that was the very simple calculation for this question. I think you can understand very well, no problem. डियर स्टूडेंट्स, बगैर प्रैक्टिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं हो सकती. बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बी कंसंट्रेट ऑन योर बेसिकली प्रैक्टिस स्टडी, तो देन यू आर एबल टू गेट 90%, 100% मार्क्स in the exam. Dear students, next question we will discuss. What is the question? First of all, we will read out. The following are extracted from the financial statements of the firm in corporation 2010, 2009 and 2008 data is given. Net sales and basically income statement items are given and balance sheet items are given. We need to calculate the various items. First of all, compute the following ratios for 2010 and 2009. We need to calculate the net profit margin, total asset turnover, return on asset, return on investment, return on total equity, return on common equity and gross profit margin, and discuss the trend in profitability and identify specific causes for the trend of the business. First of all, we will find out the net profit margin. Dear students, first of all, we will find out the net profit margin. What is the formula? Can you tell me? आपको याद हो गया होगा अभी तक, बहुत क्वेश्चन किए हमने. Okay, no problem. I can tell you. Net profit margin
is equal to net income before number of controlling interest and non-recurring items divided by net sales। तो 2 साल का हमने निकालना है, तो नेट इनकम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेट इनकम इज गिवन इज 5600 फॉर ईयर 2010। लिख लेंगे हम 5600 डिवाइडेड बाय सेल इज गिवन 233,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 233,000 क्वेश्चन से आप देख सकते हैं सेल इज गिवन। ओके, अब हम सिंपल है इसको कैलकुलेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5600 डिवाइडेड बाय 233,000 multiply by 100, it will be equal to 2.4% for year 2010. Now we will calculate the net profit margin for year 2009. 2009 का कितना प्रॉफिट दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स? 5885। 5 फार्मूला सेम रहेगा, 885 डिवाइडेड बाय 204,000 सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें। 5885 डिवाइडेड बाय 204,000 multiply by 100, dear students, that will be 2.88%. It shows that in 2010 profit margin has increased. In 2009 2.88%, in 2010 2.4%. It means it has decreased in 2010. Now we will calculate another ratio. What is the ratio? Total asset turnover. Is equal to net sales divided by average total assets. Dear students, we need to calculate the average total assets first, then we can put the amount into the formula. Net sale is given for year 2010 233,000 divided by 202,000 plus 173,000। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 202,000 प्लस 173,000 divided by 2, that is 187,500. 87,500. That will be 233,000 divided by 187,500. That will be 1.24 times in year 2010. Now we can calculate the total asset turnover for year 2009. For 2009 net sale will be 204,000 divided by average निकालने के लिए 173,000 receivables plus 161,000 divided by 2। तो पहले आप नीचे वाली अमाउंट कैलकुलेट कर लें। 173 प्लस 161,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 167,000। 2,04,000 डिवाइडेड बाय 167।
7,000. अगेन इसको डिवाइड कर लें, दैट विल बी 1.22 टाइम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है कैलकुलेशन, आप इसकी देखें, कोई मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दी रिटर्न ऑन एसेट्स. Return on assets is equal to, we need to calculate the return on assets. What will be the formula? Return on asset का formula है net income divided by average total assets. Net income is given for year 2010, 5,600 divided by average total assets are 144,900. Dear students, we need to calculate the basically average total assets. All liabilities, बेसिकली हमें जो है तमाम लाइबिलिटीज़ और तमाम ओनर्स इक्विटी का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 144,900 आ जाएगा. इसको हम डिवाइड कर देंगे 5,600 को डिवाइडेड बाय 144,900, दैट विल बी 5,600 डिवाइडेड बाय 144,900 मल्टीप्लाई बाय 100, 3. यहाँ भी पास भी है. Dear students, now we will calculate the return on assets. Return on assets का फार्मूला है net income divided by average total assets. Net income is given 5,600 और एवरेज टोटल एसेट कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार ये है कि अगर एसेट्स गिवन ना हो तमाम लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो वही हमारे एसेट्स भी होंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो 144,900 आ गया. तो हमने क्या कर लिया, रिटर्न ऑन एसेट्स निकाल ली फॉर ईयर 2010. नाउ वी विल कैलकुलेट दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कैलकुलेट दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. व्हाट विल बी द फार्मूला? Net income divided by average investment. Net income is 5,600 divided by 144,900 multiply by 100. 5,600 divided by 144,900 multiply by 100, that will be 3.87%. Now we will calculate another ratio, that will be return on total equity. Formula will be the return on total equity is equal to net income before non-recurring items minus dividends on redeemable preferred stock divided by average total equity. Net income is given for year 2010 5,600 and 5,885 for 2009. Dear students, now we will calculate the return on total equity. Formula will be the net income before non-recurring items minus dividend on redeemable preferred stock divided by average total equity. Net profit is given for 2 years. For the 2010 net profit is 5,600 and for 2009 5,885. ठीक है जी, divided by average total equity.
तो 5,600 फॉर 2010 डिवाइडेड बाय 123,900, यानी कि सारी इक्विटीज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये अमाउंट आपके सामने आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट बाय कैलकुलेटर. 5,600 डिवाइडेड बाय 123,900 multiply by 100, that is 4.52%. इसी तरह हम 2009 का भी कैलकुलेट कर लेंगे. फार्मूले के अंदर अमाउंट पुट करेंगे 5885 डिवाइडेड बाय 118,800. एवरेज ले लेंगे हम 5885 डिवाइडेड बाय 11,800 multiply by 100, that is 4.95%. Now we can calculate another ratio, that is return on common equity. Return on common equity is equal to net income before non-recurring items minus preferred dividends divided by average common equity. Net income is given 5,600 and 5,885 for 2009. ओके, माइनस कर देंगे उसमें से स्टॉक डिविडेंड 280 गिवन है और 280 आप माइनस कर देंगे दोनों सालों में से तो आपकी अमाउंट आ जाएगी. तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 5,600 माइनस 280 डिवाइडेड बाय एवरेज 119, यानी कि आपने कॉमन इक्विटी की एवरेज ले लेनी है. दूसरी अमाउंट 5885 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 114,800, दैट विल बी दी एवरेज कॉमन इक्विटी. तो कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें. 5,600 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 119900 multiply by 100, that will be 4.44% will be the return on common equity. Now we can calculate the amount for the year 2009. 5,885 minus 280 multiply by 100, that is 11,4,800 multiply by 100, that will be 4.88%. So dear students, now we have calculated the return on common equity. Now we will calculate the gross profit margin at the end of the question. जगह नहीं हम यहाँ कर लेते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट margin is equal to net sales minus cost of goods sold is equal to gross profit divided by net sales multiplied by 100. 233,000 sale is given minus cost of sale is given 124,000 divided by 233,000 multiplied by 100. कैलकुलेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. 233,000 minus 124,000 divided by 233,000, that is 46.78%. तो डी स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत इजी कैलकुलेशन है. नाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर 2009. 2009
sale is given 204,000 minus cost of sale 110,000 divided by 204,000 multiply by 100. तो 204,000 में से माइनस कर दें 110,000 divided by 204,000 multiply by 100, that will be 46.08%. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कैलकुलेशन डिफरेंट रेशियोज की. नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड इन प्रॉफिटेबिलिटी. व्हाट इज द ट्रेंड? डियर स्टूडेंट्स, net profit margin, return on total assets, and return on investment, and return on total equity, and return on common equity have declined. Total asset turnover and gross profit margin rose slightly. The problem appears to be in selling and administrative expenses, other income, and taxes, since gross profit margin rose. Of particular concern is the very low return to common shareholders. Another discussion is it is lower than return on total equity and investment, which indicates that preferred owners and creditors who bear loss risk are getting a high return. That was the question. Dear students, now we will solve another problem. Question आपके सामने है, आप देख सकते हैं. What is the requirement? Compute the following ratios for both years using total net income and assets. Use ending balance sheet figures. What is the requirement? Net profit margin and return on total assets. First of all, we will calculate the net profit margin. Net profit margin का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय, बहुत सिंपल है, नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100. तो नेट इनकम हमारे पास गिवन है. डियर स्टूडेंट्स, नेट इनकम इज 1520 divided by net sales. Net sales is given 65,000 multiply by 100, that will be 2.34% of sales for year 2010. Now we can calculate for year 2009. Net income is 1,665 divided by net sales 61,000 multiplied by 100, that will be equal to 2.73%. तो डियर स्टूडेंट्स, 2010 में आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो गया. नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशो, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स. रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नेट इनकम divided by total assets. Net income is given $1520 है. Total assets are also given 32,200 for year 2010. Calculate कर लें. 1520 divided by 32,200 multiplied by 100, that will be 4.72%. इसी तरीके से 2009 के कैलकुलेट करने 1665 नेट इनकम डिवाइडेड बाय 30,600 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 5.44%. बहुत आसान है. व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज recomputer the ratios removing the effect of equity income on investments for return on total assets and use year end total assets. Now we will calculate again these ratios.
First of all, net profit margin is equal to net income divided by net sales. नेट इनकम आपकी 15 से $20 गिवन है, माइनस इसमें से कर दें 320 लेस इक्विटी इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 65,000। क्वेश्चन क्या था कि इक्विटी का इफेक्ट आप रिमूव कर दें तो फिर देखें आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन एसेट क्या आएगा। तो हमने यही किया, 1520 में से इक्विटी माइनस कर दी, माइनस 320 इज इक्वल टू 1520 माइनस 320, that will be 1200 divided by 65,000 multiplied by 100. Net profit margin will be 1.85%. इसी तरह हम 2009 की कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड 2009 का 1665 माइनस 365 is equity divided by 61,000. 1665 minus 365, that will be 1300 divided by 61,000 multiplied by 100. That will be 2.13%. So dear students, we can calculate return on assets in the same way. Return on assets is equal to net income divided by total assets. नेट इनकम हमने इक्विटी माइनस करने के बाद हमारे पास 2010 की 1200 डिवाइडेड बाय 32,200 हमारे पास एसेट्स हैं फॉर ईयर 2010। इसको डिवाइड कर लें, सिंपल है। दैट विल बी 3.73%. So dear students, for year 2009, net income will be 1300 divided by 30,600. That will be 4.2%. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कोई सिंपल सी रेशोज थी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? डिस्कस द चेंज। व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू रिमूव इक्विटी अर्निंग्स इन दिस केस? कि आपने इक्विटी अर्निंग्स क्यों रिमूव की? व्हाट विल बी द बेसिक इंटरप्रिटेशन? बेसिकली net profit margin declined when equity income was removed. Return on total assets also declined when equity income and investments were removed. Second analysis is the trend stays the same. However, the main reason for removing equity earnings is that they are not derived from the primary business and do not represent cash flow, since dividends are much lower. So dear students, today we have discussed various topics like what is profitability, what are the profitability measures, net profit margin, total asset turnover, return on assets, and we solved the various problems regarding these topics. और हमने क्वेश्चन भी किए, फार्मूले भी किए, उसको डिस्कस भी किया। आई थिंक कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, प्रैक्टिस भी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, योर प्रैक्टिस, और अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।